Okay, welcome you all. Today we start the next practical, that is experiment number 4, which is based on the unit physiology. The aim of the practical that to estimate the amount of phosphorus content in the given plant extract. So the requirement for the practical, which is test tubes, prepared beaker, colorimeter, and plant acid extract, etc. The reagent for the practical, which is plant acid extract, then standard phosphate solution, which is in 10 mg per ml concentration. The working standard phosphate solution, which is containing the 1 mg per ml. Then acid molybdate reagent and ascorbic acid solution. So here we look this practical as a theoretically because we are not performing this practical. So theoretically, you have just understand this experiment. So for analyzing the phosphorus content in the plant material, these experiment have performing, and for that experiment the colorimeter that have been used, that's why it is analyzed by the colorimeter or calorimetric methods. So here first of all these phosphorus content or phosphorus content in the plant material we can analyze with the help of this मेथड. जो प्लांट के अंदर फॉस्फेट कंटेंट कितना है, फॉस्फोरस कंटेंट कितना है, वो उसकी अमाउंट क्वालिटेटिवली देखने के लिए क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं. उसके लिए कैलोरीमीटर और कैलोरीमेट्रिक मेथड यूज करते हैं. सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो एसिड प्लांट एसिड एक्सट्रैक्ट दिया जाता है. प्लांट एसिड एक्सट्रैक्ट मतलब जो भी प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल एसिड में लेके उसे बॉयल किया जाता है. मतलब जो भी प्लांट्स के अंदर जो भी कंटेंट है वो सब वो एक्सट्रैक्ट में आ जाते. तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्लांट एसिड एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाता है. एंड दिस from this plant acid extract we can analyze the phosphorus content or phosphate phosphorus content in the plant. So for this practical, the principle of that practical, it is acidic medium molybdate react with the phosphate ions to form the golden yellow phosphomolybdate complex. So when we performing this practical, जब भी हम एसिड एक्सट्रैक्ट में मॉलिब्डेट रिएजेंट वहाँ पे ऐड करते हैं, तो जो मॉलिब्डेट कंपाउंड है दे विल बी रिएक्टेड विद द फॉस्फेट आयंस एंड वहाँ पे जो भी सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है. दिस कलर इट इज कन्वर्टेड इनटू द गोल्डन येलो फॉस्फोमोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स. वहाँ पे जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट में और जो एसिडिक मीडियम में जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट मॉलिब्डेट मॉलिक्यूल्स के साथ वहाँ पे कंबाइन हो जाता है. उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, गोल्डन येलो वहाँ पे कलर आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा. एंड दे फॉर्म द फॉस्फोमोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स. सो द concentration in the presence of reducing reagent like ascorbic acid is reduced to the blue colored complex. So reduce the phosphomolybdate complex, the intensity of which is proportional to the phosphate phosphorus content. So complex form होने के बाद वहाँ पे जो reducing agent है like the ascorbic acid, so when we adding this ascorbic acid, वहाँ पे जो पहले कलर फॉर्म हुआ है that is golden yellow color जो फॉर्म हुआ है, this golden yellow color that will be changed or they will be reduced into the blue color. So this ascorbic acid ultimately they can reduces the phosphomolybdate complex, and those intensity or
चेंज इन कलर इंटेंसिटी वो हम कैलोरीमीटर पे यूज करते हैं। सो जो कलर चेंज होता है, जितना हम एस्कॉर्बिक एसिड वहाँ पे यूज करेंगे, उतने ही प्रोपोर्शन में वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, दैट इज PO4P फॉस्फेट, जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, they will be ultimately reduced. So this is the main principle in this practical. So जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं, so at that time we can use the or we can make the 3 test tubes, one for blank, then second test tube it is for standard, and third test tube it is for plant mixture. So I prepared these test tubes in the given table. So each test tube, first of all add 1 ml of acid molybdenate reagent. So then there will be addition of the 0.2 ml ascorbic acid, and so this mixture, these mixtures of the content, they will test tubes well vortex mixture for mixing the all content of this test tube. So these test tubes keeps side or keep rest for the 1 minute. Then read these optical densities on calorimeter at the 625 nanometers in the red filter. So we can adjust the standard, or using the standard we can calculate the phosphate phosphorus in 100 grams of the plant material. So in this way we can find out the phosphate content or phosphate phosphorus content in the plant material. For calculations, so रिजल्ट में आप देख सकते हो, so 100 grams or dried plant material, they have contents about the very the Mg amount of this phosphorus phosphate content. So this is the calculation or observations table. So ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करने हैं, एक ब्लैंक, एक स्टैंडर्ड की, और एक प्लांट मिक्सचर और रिएक्शन मिक्सचर की. सो यहाँ पे this is the table. In that, first of all there will be additions of the phosphate solution, then adjust the test tubes with the distilled water, then there will be additions of the phosphate phosphorus reagent, then add the 1 ml of the acid molybdenate reagent, then lastly there will be addition of the ascorbic acid. So the color of the test tube that will be reduced, and ultimately that means the reduce the phosphomolybdate complex. So the intensity of the color that will be changed, and they will be measured on the calorimeter. So here the observations table, in that these readings of the 1 ml. So for whole extract हम 100 ग्राम मटेरियल यूज करते हैं, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो उसके जो रीडिंग्स रहेंगे वो हम, जो भी आपका लास्ट रीडिंग रहेगा, दैट इज 100 ग्राम प्लांट मटेरियल में कितने फॉस्फेट फॉस्फोरस कंटेंट आता है, वो हमें यहाँ पे देखना है. तो उसके लिए पहले हम जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के साथ जो हमारा सैंपल है दैट विल बी कंपेयर करेंगे. तो जो स्टैंडर्ड ट्यूब है एक की, they contain the 1 mg phosphorus phosphate content. So 1 mg का यहाँ पे हम देखेंगे कि सैंपल में कितना आ सकता है. देन 1 ml में जो भी 1 ml प्लांट एक्सट्रैक्ट में कितने फॉस्फोरस फॉस्फेट कंटेंट आते हैं वो हम देखेंगे. फिर 1 ml का कन्वर्जन हम 100 ml में उसको यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ml प्लांट एसिड एक्सट्रैक्ट में कितने म्यूजी फॉस्फोरस फॉस्फेट कंटेंट आते हैं वो हमें मिल जाएंगे. और 100 ml में आते हैं तो देन अगेन हम जो प्लांट मटेरियल यूज किए थे 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम में 0.5 ग्राम हम प्लांट मटेरियल लेके उसका एसिड एक्सट्रैक्ट 100 ml बनाया था.
तो जो भी आपका जो रीडिंग है उसे हम अगेन 100 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और डिवाइड हम 0.5 से करेंगे, तब हमें जो भी रिजल्ट आएगा वो 100 ग्राम प्लांट मटेरियल में कितने फॉस्फेट फॉस्फोरस कंटेंट मिलते हैं वो मिलेंगे. So it is very minute in range, that is from μg for the 100 gram plant material. So this is your fourth practical. Then let's see the fifth practical of the paper third. Practical. So this is the next practical experiment number 5. That is again based on the your physiology unit, that is estimation of amount of iron content in the given plant acid extract. So similar plant acid extract that will be used for the estimation of the iron content. So plants के अंदर different macro as well as micronutrients present रहते हैं. तो उसमें से जो फर्स्ट हमने देखा कि फॉस्फोरस कंटेंट हम एस्टिमेट कर सकते हैं. सेकंड प्रैक्टिकल इट इज बेस्ड ऑन आयरन कंटेंट. तो प्लांट्स के अंदर जो भी आयरन कंटेंट है, आयरन कंटेंट उसकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. तो जो रिक्वायरमेंट्स है इट इज सेम लाइक द प्रीवियस प्रैक्टिकल, दैट इज प्लांट एसिड एक्सट्रैक्ट, टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, pipettes and colorimeters. So for this practical, the reagent that we'll use, that is 50% nitric acid, then 20% potassium thiocyanate solution, amyl alcohol, standard stock iron solution, standard working iron solution, which is in concentration of 1 mg per ml. So for this practical, it is used for estimation of the iron content in the plant material. So plant material के अंदर iron content कितना है, iron की quantity कितनी है, वो मेजर करने के लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. सो नेचुरली आपको पता है कौन से जो प्लांट है उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा, फॉर एग्जांपल बता सकते हो आप? तो जो वेजिटेबल्स है, जो बीट रूट है उसके अंदर कैसे आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है. तो जो प्लांट्स के अंदर जो आयरन की क्वांटिटी है वो मेजर करने के लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. सो प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिकल, the amount of the iron in plant material, it is very variable, while 10 to 250 milligram per kg of dry matter, it is not an uncommon range. The leafy parts of the plant may contain up to the 1000 milligram per kg. The thiocyanate method is very sensitive method and can detect the amount of 1 to 10 mg of. So in the thiocyanate method, this thiocyanate addition of the potassium thiocyanate, ferric salt in dilute acid solution. So the
thiocyanate is to the amount of iron present, and the color comparison is facilitated by extracting the ferric thiocyanate with amyl alcohol. The color of amyl alcohol layer is then compared with that of the standard prepared under the same condition. So here the thiocyanate method is used to identifying or to quantifying the amount of the iron in the plant material. Different plant में जो iron की range है that will be very varied range. So for detections of the 1 to 10 mg of iron, this thiocyanate method will be used. So this thiocyanate method, in that method there will be additions of the potassium thiocyanate add किया जाता है. So there will be ferric salt, there will be formed some complexes. So due to uh, this complex, that means the ferric thiocyanate that will be formed, and they will be again compared with the amyl alcohol. So this color that will be changed due to this amyl alcohol, and this color intensity of that changing solution that will be measured, and on that basis the amount of iron which are present in the test tubes that will be analyzed. So here the color of this ferric thiocyanate, uh, it is the proportional to the iron content of the plant material. तो कलर इंटेंसिटी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें कलर ज्यादा मतलब डार्क फॉर्म हुआ है उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा रहेगा, जहाँ पे फेंट कलर फॉर्म हुआ है उसमें आयरन कंटेंट कम रहता है. So for this method, this color intensity that will be measured on the colorimetric methods. So procedure, that means in laboratory we have take the 3 test tubes, one as a blank, then second it is used for the standard preparation, and third for the reaction mixture. So here we can prepare the test tubes which are same like the given table. So in each test tube, first of all add 1 ml of nitric acid and 5 ml of potassium thiocyanate solution. Then there will be addition of the 10 ml amyl alcohol to each tube, and these all mixtures they will be mix well, and for mixing well they will be using the vortex mixture. Then these test tubes will be kept for 10 minutes. After 10 minutes, read the optical density on the colorimeter at the 450 nanometers, that is the blue filter. So using these readings, the calculate the amount of these iron content which are present in the 100-gram plant material. Because we using the for acid extract, we can use the 100-gram plant material. So जो those readings है, or we can use these plant for preparing the plant extract. We can use the 0.5 gram. We can use the 100-gram material. So यहाँ पे जो भी readings है, that will be converted into the 100-gram. So here the readings, look here the observations table. In that you have to see the optical density of blank, it is 0.1, or it is mostly it is 0.00. Then in standard and reaction mixture. So in reaction mixture the reading is 0.09. So these readings we have merged into this table. So in standard
solution, they contain the iron content, it is 1 mg of iron. So these calculate the amount of reaction mixture, put the at the X you can put the rings of your material, then there will be 1 mg of iron in 1 ml of plant extract. Then this 1 ml which is converted into the 100 ml. So 100 mg of iron, which 100 mg of iron in 100 ml of plant acid extract. Then these 100 ml plant extract is was prepared by using the 0.5 gram plant material. So there will be for 100 gram we can use the formula C into 100, that is 100 gram and divided by 0.5 gram plant material. So यहाँ पे those reading, that is 20 mg of iron content which are present in the 100 gram plant material. So जैसे हमने phosphorus का calculation किया है, same like यहाँ पे हमें iron का भी जो iron content है iron content का calculation करना है. So in this way, these two practicals, it is based on your physiology unit, or this practical is comes under physiology. So here we can, by colorimetric method, we can analyze or quantify the amount of phosphorus and iron which are present in the plant acid extract.